Hello and welcome back to Bro. I'm John and I hope you all are fine and I'm clearly audible to everyone. Today in this live session I'll provide you four dictations as usual I'm providing. जो पहली dictation हमारी होगी वो होगी 299 words के and I'll dictate it at 60 words per minute speed पे. The next dictation will be of 289 words. Same I'll dictate it at 60 words per minute पे. वो भी लीगल मिक्सड होगा, लीगल मिक्सड, ठीक है. उसके बाद हमारी तीसरी डिक्टेशन जो आज के सेशन में होंगी वो होगी 340 वर्ड्स एंड जिसकी स्पीड 70 वर्ड्स पर मिनट होगी, ठीक है. जो हमारी लास्ट डिक्टेशन होगी इस सेशन में वो होगी 405 वर्ड्स पर मिनट के, जो हम 80 वर्ड्स पर मिनट पे डिक्टेट करेंगे, ठीक है. अगर आप हमारे चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन करके रखिएगा क्योंकि हम रोज रेगुलरली एवरीडे हम लाइव आते हैं या तो सुबह के टाइम या शाम के टाइम, ठीक है. और हम एवरीडे चार डिक्टेशंस देते हैं, लीगल डिक्टेशंस. हम हाई कोर्ट के जो एग्जाम्स होने वाले हैं, स्टेनोटाइपिस्ट, जूनियर स्केल एंड सीनियर स्केल स्टेनोग्राफर, वो कवर कर रहे हैं, ठीक है. अगर आप ये जो ऑन स्क्रीन टेक्स्ट देख रहे हो, अगर आपको ये पूरा विजिबल नहीं होगा तो आप वीडियो की सेटिंग्स में जाइए, वहां पे इसकी क्वालिटीज को हाई पे रखिएगा, ठीक है. Are you ready for taking the dictation? Am I clearly audible so that we can start our dictation straight away? क्या आप तैयार हैं डिक्टेशन लिखने के लिए? ठीक है. Okay. Get yourself ready for the dictation. The dictation starts after 5 seconds. Start. This court, therefore, must carefully scrutinize the evidence to determine whether a prima facie case has been made out, warranting continuation of prosecution or the grant of bail. Stop. Furthermore, this court recognizes the delicate interplay between safeguarding public interest and upholding individual liberty. Stop. The increasing prevalence of cyber offenses necessitates stringent legal oversight, but not at the expense of due process. Stop. The doctrine of proportionality guides judicial discretion, compelling the court to evaluate whether the imposition or denial of bail aligns with the nature and gravity of the alleged offense, the stage of investigation, and the likelihood of the accused's cooperation with the inquiry. Stop. In light of these, this court proceeds with made deliberation, mindful of the broader societal implications of its ruling. Stop. The ruling herein shall not only affect the parties before this court but also contribute to the jurisprudential landscape governing cybercrime. Stop. The case thus embodies the intersection of technological innovation, legislative intent, and constitutional safeguards, a testament to the evolving nature of law in the
digital age. Stop. Upon receipt of the complaint, a formal FIR was registered and a thorough investigation was promptly initiated. Stop. The investigative process included a detailed site inspection and the recording of statements from material witnesses acquainted with the facts and circumstances of the case pursuant to Section 161 of the Criminal Procedure Code. Stop. Based on the prima facie material collected, the petitioner was found involved in the alleged offences and was arrested. Stop. The prosecutrix was presented for medical examination, which she declined. Stop. This aspect of the investigation remains open-ended and inconclusive. Stop. This court has heard the learned counsel for the petitioner and perused the records meticulously. Stop. After due application of judicial mind to the objections raised, the police report, and rival submissions, the court proceeds to render its reasoned finding. Stop. End of dictation. आई होप डिक्टेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी. So are you ready for another dictation? क्या आप तैयार है दूसरी डिक्टेशन लिखने के लिए? जो अब दूसरी डिक्टेशन होगा इसमें जजमेंट्स के नाम होंगे, ठीक है? So be prepared for it. Are you ready for another dictation? If yes, so please comment yes. अगर आप दूसरी डिक्टेशन लिखने के लिए तैयार हो तो यस कीजिए, ठीक है? यहाँ पे हमारी बाजिला जान कह रही है कि यस क्लास का एग्जैक्ट टाइम क्या होता है. हमारा एग्जैक्ट टाइम नहीं है, हम दिन में एक बार लाइव आते हैं, ठीक है? या तो हम सुबह मॉर्निंग में आते हैं या शाम को इवनिंग में आते हैं. आप हमारी टेलीग्राम से जुड़ जाइए, वहां से हम लिंक आपको प्रोवाइड कर देंगे. और हाँ, आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, जो नोटिफिकेशन बेल है उसको भी ऑन करके रखिएगा ताकि आपको पता चले कि हम लाइव कब आएंगे, ठीक है? यहाँ पे उवैस कह रहा है कि वॉइस ठीक नहीं आ रही है. आ रही थी, ठीक है, अब आ रही है, ठीक. ओके, ठीक है. Get yourself ready for the dictation. The dictation starts after 5 seconds. Start. A meticulous perusal of the facts and circumstances reveals that the dispute is inter se amongst cohabitants and essentially stems from property related discord, thereby bearing ex facie the characteristics of a civil nature. Stop. As enunciated by the Honorable Apex Court in Mitesh Kumar J. Shah
versus State of Karnataka and others 2021, the criminal justice system must not be wielded as a weapon of intimidation in civil altercations. Stop. To do so amounts to abuse of process of law, which stands condemned under malum prohibitum. Stop. The investigatory powers of the police under Chapter 12 CRPC do not culminate into a mandamus to lodge FIR in every complaint, especially when the facts disclose no mens rea and are divorce any cognizable offense. Stop. Accordingly, this court, finding no justiciable cause, hereby dismisses
क्या मेरी आवाज सबको आ रही है? क्या मेरी आवाज आ रही है? Am I audible to everyone now? एक मिनट, ठीक से आवाज मिली? हेलो, ठीक है। क्या आप मेरी आवाज अच्छे से आ रही है सबको और लाउडली आ रही है? ठीक है, ठीक है। ओके, नाउ गेट योर फॉर अनदर डिक्टेशन. The dictation will start after 5 seconds. Start. This court, comma, therefore, comma, must carefully scrutinize the evidence to determine whether a prima facie case has been made out, comma, warranting continuation of prosecution or the grant of bail. Stop. Furthermore, comma, this court recognizes the delicate interplay between safeguarding public interest and upholding individual liberties. Stop. The increasing prevalence of cyber offenses necessitates stringent legal oversight, comma, but not at the expense of due process. Stop. The doctrine of proportionality guides judicial discretion, comma, compelling the court to evaluate whether the imposition or denial of bail aligns with the nature and gravity of the alleged offense, comma, the stage of investigation, comma, and the likelihood of the accused's cooperation with the inquiry. Stop. In light of these considerations, comma, this court proceeds with ruling herein shall not the parties before this court but also contribute to the jurisprudential landscape governing cybercrime. Stop. The case thus embodies the intersection of technological innovation, comma, legislative intent, comma, and constitutional safeguards, a testament to the evolving nature of law in the digital age. Stop. Considering the seriousness of the allegations, comma, the nature of the offense, comma, the stage of investigation, comma, and keeping in mind the larger societal interest, comma, this court is of the considered view that it is not a fit case for grant of bail at this juncture. Stop. The interests of justice demand objectivity and balance, comma, especially where personal liberty is in context with public order and investigative sanctity. Stop. Accordingly, comma, this court does not
find any compelling reason or legal ground to exercise discretion in favor of the petitioner. Stop. The law does not favor the desires of the negligent. Stop. The application is thus devoid of merit and stands rejected. Stop. It is clarified that nothing stated herein shall be construed as an expression of opinion on the merits of the case. Stop. The observations are confined solely to the disposal of the instant bail application and shall not influence the trial court in any manner. Sub judice lis. Stop. The bail application is disposed of and the file shall be consigned to records after due compliance. Stop. Dictation ends. ठीक है, इस डिक्टेशन में कोई प्रॉब्लम तो नहीं आई ऑडियो में? ठीक है, अब हमारी जो लास्ट वाली डिक्टेशन होगी इस सेशन की वो बहुत इंपॉर्टेंट डिक्टेशन है, ठीक है, और ये है 405 वर्ड्स के। तो इसको मैं 80 वर्ड्स पर मिनट पे डिक्टेट करूंगा। यहाँ पे थोड़ा नेटवर्क इशू होता रहता है, तो आज नेटवर्क इशू था हमें, सो ये अब ज्यादा से टाइम नहीं रहेगा, आज ही था खाली, तो कल से फिर से हम वैसे ही क्लीन एंड सॉफ्ट एटमॉस्फेयर में डिक्टेशन दे देंगे। तो फिलहाल आर यू रेडी फॉर टेकिंग दी एनोटेशन? ठीक है, okay, get yourself ready for the dictation. The dictation will start after 5 seconds. Start. Briefly stated, comma, the prosecution's case ठीक है, अभी नए से स्टार्ट करो। ठीक है, अब तैयार रहो डिक्टेशन के लिए, ठीक है, इसमें थोड़ा मसला हो गया था। ओके, क्या मेरी आवाज आ रही है अच्छे से? ओके, गेट योरसेल्फ रेडी फॉर द डिक्टेशन. The dictation starts after 5 seconds. Start. Briefly stated, comma, the prosecution's case emanates from the seizure of 2 loaded tippers, comma, the accompanying bills for which purportedly exceeded the rates fixed by the duly
constituted deputy commissioner, the licensing authority under the relevant statutory framework. The complainant initiated proceedings by which led to the registration of an FIR and culminated in the filing of a challan against the accused. Charges were framed under Section 188 of the Indian Penal Code and Section 21 of the Brick Claims Regulation Act. The accused, relying on the fundamental principle of presumption of innocence or in dubio pro reo, pleaded not guilty and sought trial. Thereupon, the prosecution was directed to lead its evidence. During the hearing, the learned counsel for the accused invoked that no act constitutes a crime unless prescribed by law, arguing cogently that cognizance under Section 188 IPC cannot be taken except on a complaint by a competent person as mandated authority a duly authorized government official. It emerged that the FIR was predicated on a report submitted by the Tahsildar, who, according to the applicable government order SRO 92, lacks the requisite competence to act as the licensing authority. This procedural irregularity invokes the legal doctrine of juris nullitus, rendering the challan infirm and liable to be cautioned with respect to offences under both IPC Section 188 and Section 21 of the Brick 8 and Section 21 of the Brick Claims Act. In consonance with the delegated authority cannot be sub-delegated, and in observance of the overriding principle of ex debito justitia, this court invokes Section 258 CRPC to truncate further proceedings in the interest of justice. The accused is consequently absolved from all liability. The final disposition of the matter. In adjudicating such matters, courts must balance the imperatives of justice with the protection of fundamental rights, including the right to privacy in the digital realm. The principle of audi alterum partem, to hear the other side, is, ensuring that the accused is afforded a fair opportunity to present their end of dictation. क्या इस डिक्टेशन में किसी को कोई प्रॉब्लम आई? ये डिक्टेशन इंपॉर्टेंट है, ये वाली जो मैंने लास्ट में दी. तो यहाँ पे नेहा जी कह रहे हैं कि क्लियर नहीं थी डिक्टेशन. जो इसका मसला
कर लो तो कल से ऐसा चीज नहीं होगा। सो इनकन्वीनियंस इज हाईली रिग्रेटेड, ठीक है। वंस दिस वीडियो इज अपलोडेड तो हो सकता है वहां से अपलोडेड वीडियो में आपको ये प्रॉब्लम ना आए फिर। आज की हमारी जो डिक्टेशन थी तकरीबन सब में प्रॉब्लम आई है पहली को छोड़ के, तो आज आप मैनेज कर लो तो कल से ऐसा चीज नहीं होगा, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे आ रहे हैं कि सर हाउ टू इंक्रीज स्पीड इन शॉर्ट हैंड। शॉर्ट हैंड में स्पीड इंक्रीज करने के लिए पहले देखनी है आपकी स्पीड क्या है। अगर आपकी स्पीड 60 है तो आप काम किया करेंगे 60 वाली डिक्टेशन आपको लिखनी है 70 के आसपास, ठीक है। और उसी से आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। हम जो यहाँ से ये लाइव सेशंस करते हैं हमारा ये मकसद होता है, हम 4 डिक्टेशन लाते हैं, 2 हमारी 60 वर्ड्स के होते हैं और जो बाकी 2 होते हैं वो है 70 और 80। लेकिन हम इनको फ्लक्चुएशन स्पीड में दे देते हैं ताकि आपकी जो स्पीड है वो बढ़ जाए, ठीक है। तो आप हमारी सेशन से बने रहिए और जो हमारी प्रीवियस वाली डिक्टेशन जो लाइव दी है हमने पिछली लेक्चर्स वो अटेंड कर लीजिए। वहां से आप देखोगे कि आपकी स्पीड में ऑटोमेटिकली फर्क आएगा। जब आप पहले डिक्टेशन लोगे तो फिर जब दूसरी डिक्टेशन लोगे, दूसरी सेशन लाइव सेशन, तो आपको खुद लगेगा कि हाँ इसमें स्पीड में थोड़ा सा फर्क आ रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। तो ये जो आज का डिक्टेशन वाला सेशन था, तो आई होप कि आपको इसमें प्रॉब्लम तो आई है, फिर भी आपने लिखा होगा, कुछ मिला होगा। तो मैं इसकी जो ये पीडीएफ टेक्स्ट फॉर्मेट है मैं आपको ये सेंड कर दूंगा ग्रुप में, वहां से आप उसको कलेक्ट करके देख लेना। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, ठीक है। तो वहां से चेक कर लीजिएगा आप। तो कल से हमारा जो ऑडियो का मसला है या नेटवर्क का मसला है वो नहीं रहेगा, ठीक है। मैं इस पे वर्क करूंगा, देखूंगा कि प्रॉब्लम कहाँ से आ रही है। तो अगर किसी को कोई सवाल है तो 1-2 मिनट में रुकता हूँ आपके लिए, आप पूछ सकते हो सवाल अगर आपके हैं कोई। ये बोल रहे हैं यहाँ पे शोर बख्शा की ग्रुप किस पे है। जो हमारा ग्रुप टेलीग्राम पे है, तो आप ये डिस्क्रिप्शन में जाइए, वहां पे टेलीग्राम की लिंक है, वो वहां से ज्वाइन कर लीजिए। वहां पे आपको ग्रुप में ज्वाइन किया जाएगा, फिर वहां से आपको मटेरियल मिल जाएगा। मीनवाइल अगर हमारा यहाँ पे कोई नया कैंडिडेट है तो वो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हमारी प्लेलिस्ट में जा सकता है, वहां पे उसको बहुत सारी वीडियोस हेल्पफुल मिल सकते हैं। हमारे ऑलमोस्ट 80 वीडियोस हो गए हैं, तो उनसे आप हेल्प ले सकते हो। और लाइव क्लासेस जो हमारे हैं वो तो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। उनमें हर एक लाइव क्लास में 4-4 डिक्टेशंस होंगी। कोई और सवाल है? ठीक है, आज के लिए इतना काफी है। आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। हाँ, एक और सवाल आया है। मिस्टर इंडिया कह रहे हैं कि सर एक डिक्टेशन को डिफरेंट स्पीड में जॉट डाउन करने से 60, 70, 80 स्पीड इंक्रीज होती है। एक डिक्टेशन को डिफरेंट स्पीड में करे उससे 60, 70 स्पीड। मैं आपका सवाल नहीं समझ पा रहा हूँ। यहाँ पे कह रहा है कि वहीद कुमार सर, हाउ मेनी इयर्स यू हैव टॉट शॉर्टहैंड आफ्टर दैट यू गॉट सिलेक्ट। ये क्या आपका सवाल ये है कि आपने कितने साल पढ़ा है उसके बाद आप सिलेक्ट हुए हो? अगर ऐसा सवाल है तो मैं उसका जवाब दे दूं तो मुझे तकरीबन शॉर्ट हैंड के फील्ड में हाई कोर्ट में काम करते हुए 15 इयर्स हो गए हैं, ठीक है। 15 इयर्स से पहले मैंने तकरीबन 1-2 साल पढ़ा था। उन दिनों हमारे एरिया में कोई शॉर्ट हैंड नहीं पढ़ता था, उन दिनों बहुत मुश्किल होता था शॉर्ट हैंड पढ़ना। तो मैंने फिर ऑनलाइन हेल्प ले ली, खुद मेहनत करके फिर मैंने 1 साल तक शॉर्ट हैंड पढ़ा। उसके बाद मैं सिलेक्ट हुआ हाई कोर्ट में। अब मुझे हाई कोर्ट में काम करते हुए 15 इयर्स हो गए, ठीक है।
तो तब से मैं पढ़ा रहा हूँ, मैं ऑफलाइन इंस्टीट्यूट्स में भी पढ़ा रहा था, अब ऑनलाइन स्टार्ट किया हमने इस साल, तो अब ऑनलाइन भी हर किसी को हमसे हेल्प मिल रही है। तो यहाँ पे और क्रेड और उल्फत सर वर्ड्स पता होंगे कि किस कैसे लिखने हैं, लेकिन स्पीड का टाइम पे लिखना आता ही नहीं। अगर अब लाइक तो भी है, लेकिन फिर ट्रांसक्राइब करना नहीं आता, क्या करे सर? देखो, मैंने हमेशा से बोला है, जब भी आप डिक्टेशन लिखते होगे, सुनते होगे डिक्टेशन, पहले डिक्टेशन को कंसंट्रेशन के साथ सुनना है, ठीक है? बड़े कूलनेस के साथ लिखना है। और टाइपिंग की स्पीड अगर कम है आपको, टाइपिंग की स्पीड बढ़ा दीजिए। और टाइपिंग भी स्टार्ट करना हमें कंसिस्टेंसी में, ठीक है? हमें जल्दबाजी नहीं करनी, ना तो डिक्टेशन लेने के टाइम और ना ही ट्रांसक्रिप्शन करने के टाइम, क्योंकि जो ज्यादा इंपॉर्टेंट है वो ट्रांसक्रिप्शन है, ठीक है? ट्रांसक्रिप्शन में आपकी गलतियां नहीं होनी चाहिए, ठीक है? अगर आपको शॉर्ट हैंड में कोई आउटलाइन बनानी नहीं आती है बट आप पढ़ सकते हो, तो ये कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है? क्योंकि एट द एंड ऑफ द मैटर क्या है, हमें ट्रांसक्रिप्शन। तो दोनों चीजों में कंसिस्टेंसी रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। बाकी ये जो चीजें हो रही है आपके साथ, ये होती रहती है, तो इन चीजों को ओवरकम करना ही आपको ब्रिलियंस कहा सकता है, ठीक है? सो बी पेशेंट, सब चीजें आराम से हो जाएगी। आप अपने आप को डिमोटिवेट नहीं करना। अगर आपको आज 60 वर्ड्स में लिखते हो, कल 60 वर्ड्स डिक्टेशन नहीं लिख पाते हो, या 70 में प्रॉब्लम आ रही है, 80 में प्रॉब्लम आ रही है, तो ये ओवर द नाइट ठीक नहीं होगा, ठीक है? इसमें टाइम लगेगा। अभी 1 महीना है एग्जाम तक, तो तब तक ये सारी चीजें ठीक हो जाएगी। एंड आई एश्योर यू कि आप हमारी लाइव सेशंस कंडक्ट किया करें, आपको खुद फर्क लगेगा कि नहीं, आप इम्प्रूव हो रहे हैं कि नहीं। यहाँ पे हमारे बहुत सारे कैंडिडेट्स हैं जो इम्प्रूव हुए हैं, बहुत सारी प्रॉब्लम्स हुआ करती थी। सो कंटिन्यूसली डिक्टेशन लिखा करो, डिफरेंट ऑथर्स से भी, हमारी भी लिखा करो, तो उससे आपको खुद फर्क पता चलेगा। यहाँ पे कह रहा है कि सर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं हो रहा है। तो आप जो दूसरा हमारा लाइव सेशन है शोएब मुश्ताक, पिछला लाइव सेशन, उसमें ज्वाइन करने है, वहां से आप डिस्क्रिप्शन पे जाइए, वहां से आप ज्वाइन कर पाओगे, ठीक है? हमारे बहुत सारे वीडियोस में टेलीग्राम की लिंक दी गई है, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है? आई होप you are satisfied now, and I wish you all the very best for your future. Let's hope for the best and wait for tomorrow, and tomorrow I'll provide you the great dictations, ठीक है? Thank you so much for joining the live session. I'm going now to conclude dictation, ठीक है? Okay, all the very best.